Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Giri Vara Hari Gopi Janavallabha Giri Vara Nandana Gaja Janandhaya Nandana Gaja Janandhaya Jamuna Tira Jamuna Tira Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Giri Vardhari Jaya Gopi Janavallabha Giri Vardhari Nandana Gaja Janandhaya Yasodanandana Gaja Janandhaya Jamuna Tira Jamuna Tira Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavallabha Giri Vardhari Jai Gopi Janavallabha Giri Vardhari Giri Vardhari Nandana Gaja Janandhaya Yasodanandana Gaja Janandhaya Jamuna Tira Jamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Vihari
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Oh, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai, Prabhupada. Jaya, Jaya, Gurudev, 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 Jai, Gurudev. Jai, Jai, Gurudev, 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 Jai, Gurudev. And if I go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Vimalande, Hari Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai. Umagyantimidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasyatya Desatarine Anchakalpa Tarubhisya Kripa Sindhu Pevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Har Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimakti Bhakti Charu Swami Iti Namine Snigdha Chaita Sara Netram Namatam Saralato Prabhupada Pranam Maumi Bhakti Charu Padam. Hare Krishna. Yara Prabhupada ki jai, Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. The spiritual master disappears for different reasons, and he's always under the control of the divine energy, or the what we call Daivi Shakti. So his disappearance is organized by or orchestrated by the Supreme Lord directly. अध्यात्म में गुरुदेव का जो अप्रकट होना है वो अलग अलग कारणों से होता है, क्योंकि वे भगवान की दैवी शक्ति अंतरंग शक्ति के हमेशा अंतर्गत ही कार्य करते हैं, इसलिए उनका जो अप्रकट होना है वो अंतरंग शक्ति के द्वारा या परम भगवान के निर्देशन में ही संपन्न होता है. We might see so many material considerations that apparently brought about, I use the word apparently, brought about the disappearance of a great soul. But these are just part of the process for the conditioned souls to see. तो हो सकता है हमें उसके पीछे कई भौतिक अलग अलग कारण देखें, जिनके कारण ये भौतिक अप्रकट रूप से वो हुए, लेकिन ये सिर्फ बद्ध जीव के देखने के ऊपर से विचार के लिए है. The appearance of a great soul and the disappearance are all under the control of the
spiritual energy, although things may look ordinary from an ordinary point of view. महान आत्मा का प्रकट या प्रकट होना पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। हो सकता है साधारण दृष्टि से ये ऐसा प्रतीत नहीं होता। When Krishna left the planet, he apparently died by getting shot in the foot with an arrow. जब कृष्ण इस जगत से प्रकट हुए तो बाहर से देखने में क्या लगा कि वे एक तीर के द्वारा उन्हें चोट लगी और उसके कारण वे मर गए। But it was a dramatic performance for the non-devotees, that's all. लेकिन ये अभक्तों के लिए भगवान ने एक नाट्य प्रस्तुति दी थी। Krishna orchestrated that in such a way so he could find a way to leave the world and at the same time keep the faithless and strengthen the faithful. तो कृष्ण ने ये लीला इसलिए की ताकि वो इस जगत से प्रकट हो पाए और साथ ही जो भगवान में विश्वास नहीं करते वे वैसे ही बने रहें। इसलिए भगवान ने लीला की और ताकि विश्वास जो करते हैं उनका विश्वास बढ़ता रहे। Same way with the pure devotees, they're not under the control of the external energy. इसी प्रकार भगवान की तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त भी हैं वे बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं। What is the meaning for us, or what is the lesson for us when a great personality disappears? जब कोई महान व्यक्तित्व प्रकट होते हैं तो उसका हमारे लिए क्या अर्थ है और उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? Why do they disappear? What is the reason? क्यों वे प्रकट होते हैं? उसका कारण क्या है? There is the internal reason, and that is that the Lord wants them to serve somewhere else. So in order to orchestrate that, he creates this disappearance. तो इसका आंतरिक कारण तो यह है कि भगवान चाहते हैं कि वो भक्त कहीं और सेवा करें, तो उस सेवा में वो उससे उस सेवा में जा पाए, इसके लिए भगवान ऐसा प्रकट होने का आयोजन करते हैं। And what for us is that for those who are practicing devotional service under the care of that great soul, they understand now they can, in that mood of separation, they can do more service to please the spiritual master or do better service. लेकिन वे भक्त जो उस महान आत्मा के अधीन होकर भक्ति कर रहे थे, उन्हें फिर ये समझ में आता है कि अब विरह के भाव में वे और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। What that really means is that serious devotees, when their spiritual master leaves or a great soul leaves, they want that association again. So they know that the way to get that association is to become more dedicated to the instructions of the spiritual master. तो ये इस तरह होता है कि जब कोई महान आत्मा आध्यात्मिक गुरु प्रकट होते हैं तो जो उनके प्रति समर्पित शिष्य हैं वे चाहते हैं कि हमें वो संग फिर से चाहिए। तो उन्हें समझ में आता है कि वो संग फिर से प्राप्त तरीका यही है कि उनके जो उपदेश थे उनके प्रति वो और अधिक समर्पित हों ताकि इसी प्रकार वो उनका संग फिर से प्राप्त कर पाएंगे। So the instructions of the spiritual master along with the mission of the spiritual master becomes the focus for those who are dedicated to the association and service of the spiritual master. तो आध्यात्मिक गुरु के उपदेश और आध्यात्मिक गुरु का जो आंदोलन है वो उन शिष्यों के लिए केंद्र बिंदु हो जाता है जो आध्यात्मिक गुरु के संग के प्रति और उनके उपदेशों के प्रति समर्पित हैं। But they also know within their hearts that they can also feel the presence of their spiritual master by his instructions and especially by dedicating themselves to the mission of the spiritual master. तो वो अपने हृदय में समर्पित शिष्य ये बात जानते हैं कि वे अपने गुरुदेव के संग प्राप्त कर सकते हैं विशेष रूप से उनकी वाणी के माध्यम से और साथ ही उनका जो उद्देश्य था जो आंदोलन था उसके प्रति अपने समर्पण के माध्यम से। This mood of separation has a stronger emphasis on the emotional connection between the devotee and the guru. गुरु और शिष्य के बीच जो भावुक संबंध है उसमें ये विरह के भाव पे बहुत जोर दिया गया है। But for the less serious devotees, those who weren't practicing up to this standard, for those who are not serious, who are not up to the standard, for them, they get a chance to increase their spiritual life by the disappearance of the spiritual master. He leaves in order to help them become more
advanced. तो जो कम गंभीर भक्त हैं या उस स्तर पे नहीं हैं, तो वे आध्यात्मिक गुरु के तिरोभाव के माध्यम से भक्ति में उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। तो गुरु इस तरह मदद करते हैं उनकी कि वे और अधिक गंभीर बने। And for the insincere, they fall away. और जो गंभीर है ही नहीं और बिल्कुल ही गंभीर नहीं है, वो तो फिर दूर चले जाते हैं। Because they're attached to the physical association of the spiritual master. When that physical association is not available anymore, they lose their enthusiasm in devotional service. क्योंकि वे जो हैं गुरुदेव की शारीरिक वपु उपस्थिति से ही आकर्षित होते थे। जब वपु उपस्थिति नहीं है, तो वो भक्ति में सेवा से भी दूर चले जाते हैं। And the spiritual master will also leave to cut away such insincere devotees. और आध्यात्मिक गुरु भी जब जाते हैं तो ऐसे जो गंभीर नहीं है भक्त, उन्हें दूर भेजने के लिए। So for the insincere, they get cut away. For those who are trying but not up to the standard, they get a chance to increase. And for those who are serious, they can actually experience the presence of their spiritual master as they continue to execute his instructions and his mission. तो जब गुरु अप्रकट होते हैं, तो जो गंभीर नहीं हैं, वो तो दूर चले जाते हैं। जो गंभीर हैं, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं आ पाए हैं, उनका और आसक्ति गुरुदेव के प्रति बढ़ती है। और जो वास्तव में गंभीर भक्त हैं, वे समर्पित हैं, तो वे गुरु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उनके मिशन और उनकी वाणी में समर्पित होते हैं। So which one are you? तो आप कौन सी श्रेणी में हैं? First class, second class, last class. Think about it. Is my Krishna consciousness going down because the spiritual master is not here? Is my Krishna consciousness going up because the spiritual master is not here? हम इसको जान सकते हैं कि क्या मेरे कृष्ण महानमृत में विकास हो रहा है या उसमें कमी आ रही है जब गुरुदेव उपस्थित नहीं है। If it's going down, that means we haven't understood the relationship nor the instructions. यदि इसमें कमी आ रही है, तो इसका मतलब न तो हमने उपदेशों को समझा, न संबंध को। And for the serious devotees, they always remember the instructions and the mission of the spiritual master. Because they study the spiritual master when he's here, they understand his nature, his mood, and how his instructions become relevant to them directly. तो जो गंभीर भक्त हैं, वे उपदेशों को भी समझते हैं, संबंध को भी समझते हैं। क्योंकि जब गुरुदेव उपस्थित होते हैं, तो उनके भाव को और उनके उपदेशों को वो समझते हुए कार्य करते हैं और समझते हैं कैसे ये मेरे जीवन में प्रासंगिक हैं। But we always go back to that statement by Srila Bhaktivinoda Thakur, which is an inscription on the Samadhi Mandir of Srila Haridas Thakur. He reasons ill that say that Vaishnavas die when thou art living still and sound. Vaishnavas die to live, and in living spread the holy name around. Which means wherever they are, they're doing the same thing. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के जो वाक्य हैं, श्रील हरिदास की समाधि पे जो इंगित हैं, तो बताया है कि वो गलत कहते हैं जो कहते हैं कि वैष्णव की मृत्यु होती है, क्योंकि वैष्णव हमें वाणी के माध्यम से जीवित रहते हैं और जहाँ भी वो रहते हैं, वो एक ही कार्य में लगे हैं, भगवान की सेवा में। Vaishnavas don't die; they simply leave one level or one area of service and go to another. That's all. वैष्णव की मृत्यु नहीं होती है, बस सेवा का एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। Death is for the conditioned souls. मृत्यु केवल बद्ध जीव के लिए है। For devotee, there's no such thing as death. It's simply moving on to another realm of devotional service. भक्त के लिए मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, यह है कि भक्ति में सेवा के एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में वो प्रवेश करते हैं। And Krishna preserves their devotional service in that transition, and they pick up where they left off and do even better service somewhere else. और कृष्ण इस परिवर्तन की प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं। भक्त वहीं से शुरुआत करते हैं जहां उन्होंने भक्ति में सेवा छोड़ी थी, और कभी-कभी और अच्छी स्थिति से भी शुरुआत होती है। I can remember I had a personal experience with when Bhakti Swami Maharaj disappeared. मुझे याद है कि
जब इस समय भक्ति स्वामी महाराज से तिरुभाव हुआ उसका व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। Bhakti Tirtha Swami would always be saying as he was undergoing his disappearance pastimes last few months, he would say, Prabhupada's calling me. Prabhupada's calling me. भक्तिदेव स्वामी महाराज अपने अप्रकट होने के कुछ महीनों पहले से ही वो ये बोलते थे कि प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं। And I didn't believe it. और मैं उस पर विश्वास नहीं करता था। So just the day before he left, I was sitting in front of Prabhupada's pictures and chanting. And Prabhupada spoke to me. He said, I am calling him. Then I believed it. I needed a direct experience. तो महाराज के अप्रकट होने के एक दिन पहले ही मैं जब प्रभुपाद के सामने जप कर रहा था तो प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा कि मैं उसे बुला रहा हूँ। Yeah. So great souls are always, they never leave pure devotional service. They move from one place to another, or sometimes they go back home just to check in, and then go back out again, continue their preaching. तो महान आत्मा कभी भी शुद्ध भक्ति में सेवा Yeah. को त्यागते नहीं हैं। वे एक जगह दूसरी जगह जाते हैं और कभी कभी भगवत धाम चले जाते हैं, फिर वहां से वापस प्रचार क्षेत्र में चले जाते हैं। Because they don't live for anything in this world. They simply live to propagate the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That becomes their only focus. क्योंकि इस जगत से उन्हें कोई लेना देना है ही नहीं। वे सिर्फ जीवित रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए, यही उनका एकमात्र केंद्र बिंदु है। When Prabhupada left, he said, before he left, he said, do what I am doing. जब प्रभुपाद जी इस संसार से गए तो उन्होंने जाने से पहले कहा, वो करो जो मैं कर रहा हूँ। So we thought, what I mean, it's not possible to do what Prabhupada was doing. हमने सोचा इसका क्या मतलब है, जो प्रभुपाद कर रहे हैं क्या हमारे लिए संभव थोड़ी है करना। But the correct understanding is that I'm preaching Krishna consciousness, spreading it, trying to spread it. You do the same. लेकिन इनकी सही समझ क्या है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी वैसा करने का प्रयास कीजिए। And one who lives for the mission of the spiritual master lives eternally with the spiritual master. तो जो आध्यात्मिक गुरु के उपदेश का पालन करने के लिए जीवित रहता है, वो नित्य रूप से गुरु के साथी है। Although there appears to be separation, but in the mood and in the heart, there is no separation. बाह्य रूप से लग रहा है अलग अलग है, लेकिन मनोभाव से और हृदय से कोई विरह नहीं है। But again, we always miss that personal association because we derive so much from that personal association. लेकिन फिर भी हम उस व्यक्तिगत संघ की कमी का अनुभव तो करते ही हैं, क्योंकि हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई उस व्यक्तिगत संघ में। Now we have to remember all of that, and at the same time remember what and the instructions of the spiritual master, which again connects us to those experiences that we had when he was personally present. तो उस व्यक्तिगत संघ की स्मृतियों को तो हमें हमेशा साथ में रखना ही है, लेकिन साथ में उन उपदेशों को भी साथ में रखना है, जिनके माध्यम से हम उनसे जुड़े और वो अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं। One of the qualities of Bhakti Charu Swami Maharaj that I observed that he was fearless. भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के एक जो गुण जो मैंने विशेष रूप से अनुभव किया कि वो निडर थे। And that's one of the qualities of a great soul. They are fearless to the execution of devotional service. ये महान आत्माओं का ये एक विशेष गुण है कि भक्ति में सेवा संपन्न कर रहे हैं, वो बिल्कुल अभय रहते हैं। Why? Because they know Krishna is there. क्यों ऐसा नहीं डरते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण हमारे लिए हमेशा हैं। Krishna is there, therefore there's no fear. कृष्ण हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। And they'll take risks on behalf of Krishna in order to spread the glories of Krishna consciousness. और कृष्ण पे विश्वास रख के वे बहुत सारे खतरे भी लेते हैं ताकि कृष्ण की महिमा को सर्वत्र प्रचार किया जाए। That's one quality I saw in Maharaj. तो ये एक गुण मैंने महाराज में देखा। In the year 2001, Maharaj had come to visit in Chicago, and at that time I was the resident sannyasi.
तो उस समय 2001 में महाराज शिकागो में आए थे और उस समय मैं शिकागो में स्थानीय सन्यासी था। And it was just around the same time when that big political upheaval happened in the United States. और उसी समय भी जो है अमेरिका में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बना था। Supposedly, some planes crashed in some buildings and knocked the buildings down, and so many thousands of people died. And then, right after that, there was alarm across the nation, and they practically closed some of the airports and had restricted flights in other airports. तो उस समय जो प्लेन जो है इमारत से टकरा गए थे 2001 में, दोनों इमारतें गिर गई थी, कई लोग मारे गए और अमेरिका में जो है स्थिति बड़ी विकट हो गई। बहुत सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था उस समय। And we were watching it on the television as it was being recorded. और महाराज और गुरु महाराज दोनों उसको देख रहे थे टेलीविजन पे जब ये बताया जा I रहा was था। sitting next to Maharaj. I think we were standing up watching it on the television together. हम दोनों खड़े थे और हम साथ में देख रहे थे टीवी। And then both of us had plans for travel right after that. और हम दोनों की अपनी-अपनी योजनाएं थी आगे भ्रमण करने की। No, the news was, it's quite risky to travel right now because, there's this same threat is still there. उस समय समाचार ये फैला हुआ था कि अभी कहीं भ्रमण करना खतरे से भरा हुआ है। Supposedly, some people from certain sectors were hijacking airplanes and taking those airplanes in different ways. So there was a fear that this was still prevalent or predominant. तो उस समय यही डर फैला हुआ था कि कुछ लोग विमानों का अपहरण कर रहे हैं और उन्हें अपनी तरह से उपयोग में ला रहे हैं। So Maharaj had to travel within a day or so. तो 1 या 2 दिन में महाराज को यात्रा करनी थी। And I said to Maharaj, Maharaj, I don't think it's a good time for travel. तो मैंने महाराज से कहा, महाराज मुझे नहीं लगता कि यात्रा करने का ये सही समय है। And I also had to travel. और मुझे भी यात्रा करनी थी। So I thought I'm gonna not travel. तो मैंने सोचा कि मैं तो अभी यात्रा नहीं करने जाऊंगा। So I said to Maharaj, I don't think it's a good time for travel. तो मैंने महाराज से भी कहा, महाराज मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा करने का सही समय है। He looked at me really strongly. Maybe some of you had that same experience. And he said, a coward dies 1,000 deaths, a hero dies once. तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से मेरी ओर देखा। हो सकता है आपको भी कुछ अनुभव ऐसे हुए हों। और उन्होंने कहा कि कायर हजारों बार मरता है और वीर एक ही बार मरता है। It was like he shot an arrow, ऐसा लगा कि उन्होंने एक तीर छोड़ दिया मुझ पे। And that arrow went right into my heart. और वो तीर सीधा दिल में जाके लगा। I couldn't pull it out either. और उसको मैं निकाल नहीं पाया। So I got the message. And he left. I stayed an extra day. तो मुझे संदेश मिल गया, वो चले गए अगले दिन ही। मैं कुछ दिन और रुका। So his service was, he was fearless in executing his service. तो वो अपनी सेवाओं को संपन्न करने में बिल्कुल निडर रहते थे। We had this problem in New York many years ago, maybe, I don't know, 6-7 years ago. न्यूयॉर्क में एक समस्या हुई थी हमें 6-7 साल पहले की बात है। Some devotees in New York wanted to sell the New York temple without the approval of the governing body commission. न्यूयॉर्क में कुछ भक्त न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर को बेचना चाह रहे थे जीबीसी की परमिशन के बिना। And that when the news got back to the GBC, they wanted to stop the sale. तो ये खबर जब जीबीसी तक पहुंची तो वे चाहते थे कि ये इस बिक्री को रोक देना है अपने को।
But the process of making the sale was already in progress. लेकिन जो विक्रय की प्रक्रिया थी वो तो अभी आगे बढ़ती जा रही थी। So when the GBC tried to intervene and stop the sale, two parties started to develop, one for the sale and one against the sale. तो जब जीबीसी ने हस्तक्षेप किया तो उस समय दो गुट बन गए, एक तो जो बेचने का विरोध कर रहे हैं और एक जो बेच रहे हैं। And there were a lot of meetings, a lot of और discussions. बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। Legal devotees who had legal knowledge were speaking about the legality of such activities. कानूनी मामलों में जानकार भक्त जो है वो इसके बारे में कानूनी चर्चा कर रहे थे। But the party that wanted to sell wasn't going to change लेकिन because it was such a big amount of money. लेकिन जो भक्त इसको बेचना चाह रहे थे, जो व्यक्ति, वो तो अपना मन बदल नहीं रहे थे क्योंकि उनको बहुत पैसा मिलने वाला था। And they gave reasons. If we sell here, we can build a beautiful temple for Krishna in another place in New York. It'll be better for people in general, and we'll also come out with a large profit at the same time. और वे तर्क दे रहे थे कि यहाँ जो मंदिर बेच देंगे बहुत पैसा मिलेगा, उससे हम न्यूयॉर्क में दूसरी जगह उससे अच्छा बड़ा मंदिर बनाएंगे और उसमें बहुत लाभ भी होगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। But Prabhupada said, don't sell temples, sell books. लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मंदिर नहीं बेचना है, पुस्तकें बेचनी है। Because these temples are like Kirtans, and although they may be whatever they are, they're still places of devotional activity. तो जो मंदिर हैं, क्योंकि वे तीर्थ स्थान हैं, भले वे कहीं भी हैं, लेकिन वे भक्तिमय कार्यों के लिए एक केंद्र है। So fighting was going on quite strong. तो लड़ाई जो है बहुत, and people were speaking in favor of both sides. और दोनों ही समर्थन दोनों ही तरफ हो रहा था, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर। So the GBC asked the Bhakti Charu Maharaj to settle it. तो जीबीसी ने भक्ति चरु स्वामी महाराज से कहा कि आप ही इसका जो है आप निर्णय कीजिए, समाधान कीजिए। They needed some special ammunition. They needed the big atom bomb, the nuclear bomb. क्योंकि जीबीसी अभी चाहते थे कि इस समस्या के समाधान के लिए परमाणु बम चाहिए, तो इसलिए गुरु महाराज को भेजा। So it was the tension was really bad because even police were involved, devotees were yelling and criticizing each other. It was really, really ugly. बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी क्योंकि पुलिस का भी इसमें दखल था और एक दूसरे के ऊपर सभी लोग चिल्ला रहे थे, आरोप लगा रहे थे। So it was coming to a head. We have to make a decision here. तो अभी हमें यहाँ पे एक निर्णय करना था। On behalf of the GBC, Bhakti Charu Swami came to one of the, what we say, the most important meetings. तो जीबीसी की तरफ से कृष्ण भक्ति चरु स्वामी महाराज वहाँ पे गए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में वे पहुँचे। And Maharaj started to speak on behalf of the GBC. और जीबीसी की तरफ से महाराज ने बोलना शुरू किया। And he was speaking very strongly about, this is Prabhupada's property. We cannot sell this temple. If we want to expand to another temple, we can do that. But this place cannot be sold. और महाराज बहुत निडरता से बोल रहे थे, ये प्रभुपाद के मंदिर है, ये प्रभुपाद की संपत्ति है, इसको बेचा नहीं जा सकता है। आपको दूसरा मंदिर खोलना है, आप जाके विस्तार करो, लेकिन इसको बेचना संभव नहीं है। And he was speaking so powerfully. और इतनी दृढ़ता से, इतनी मजबूती से वे कह रहे थे। This angered the opposition. इससे सामने वाले पार्टी को गुस्सा आ गया। And they got up and started shouting at Maharaj. और वे लोग खड़े हो गए और महाराज के ऊपर चिल्लाने लगे। And telling him to sit down and keep quiet. और बोलने लगे, आप बैठ जाओ, शांत हो जाओ। And Maharaj got stronger. और महाराज और जोर से बोलने लगे। And he was like, he was like Ramchandra killing Ravana, महाराज इस तरह लग रहे थे कि रामचंद्र जो है रावण का युद्ध कर रावण को मार रहे हैं। Or like Parasuram cutting off the arms of what is that? Kartavirya Arjun.
या फिर जैसे परशुराम जो है कार्तवीर अर्जुन की बाहें काट रहे हैं। He was like fire. And he just kept speaking despite they were yelling and trying to get him to sit down. He just kept speaking and speaking and speaking. He wasn't in the slightest bit disturbed by their nonsense. तो वो लोग चिल्लाते रहे, लेकिन महाराज एकदम अग्नि की तरह बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, और महाराज ने उनकी परवाह नहीं की कि वो चिल्ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। But he was also trying to pacify them while he was speaking. In other words, he was speaking to make them understand that what he's saying, they should understand is actually what Prabhupada is saying. तो लेकिन साथ में महाराज उन सभी को शांत करने का प्रयास भी कर रहे थे। अगर हम कहें तो वे उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप समझिए, और जो मैं कह रहा हूँ वो प्रभुपाद ही वो चाहते हैं। And finally, they actually slowed down and sat down. And Maharaj just kept on speaking. और आखिरकार वे सभी लोग समझ गए और फिर And शांत होकर बैठ that गए। particular incident was a decision that ultimately brought the temple back under the control of the GBC. तो वो जो मीटिंग हुई और उसमें जो घटनाक्रम हुआ, वही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, निर्णय, जिसके कारण निर्णय जो है इस्कॉन के पक्ष में हुआ। Everyone knows Maharaj is so gentle and so sweet and so loving and so attentive to everyone's personal needs and care, but he's also like a thunderbolt when he wants to be. हर कोई जानता है कि महाराज कितने मृदु स्वभाव के हैं, मधुर हैं, सबसे प्रेम करते हैं, हर एक की चीजों का, आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आवश्यकता है तो वे एक वज्र की तरह भी एक कठोर भी थे। They would say that about Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was soft as a rose and as hard as a thunderbolt. चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा कहा जाता है, कमल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। Srila Prabhupada was the same quality. श्रील प्रभुपाद के अंदर भी ऐसा ही गुण था। He could be so loving and so simple, so sweet, like a little humble child. But when it came to protecting the philosophy, he was like Nrsingadev. श्रील प्रभुपाद के अंदर भी यही गुण था। जब कभी कभी वो बहुत ही नम्र, बहुत ही प्रेमी बालक की तरह थे, लेकिन जब सिद्धांत या दर्शन की रक्षा की बात आती, तब उस समय वे नरसिंहदेव की तरह थे। And that's the quality of a great soul. They can be both and still be themselves. ये महान आत्मा का यही गुण है, वे दोनों तरह से कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक अपना ही व्यक्तित्व भी है। Because they're speaking on behalf of eternal religious principles. Therefore, they can speak with great authority and with great enthusiasm. क्योंकि वे शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, तो वे एक अधिकार के साथ और बहुत अधिक उत्साह के साथ वे बातें कर पाते हैं। I saw that in Maharaj. महाराज के अंदर मुझे ये गुण दिखाई दिया। Sometimes he would scare me because like I'm a nonsense sometimes, and he would look at me like, "You're a nonsense." कभी कभी महाराज मुझे डरा देते थे और ऐसे देखते थे मुझे, अरे क्या बात कर रहे हैं। I'm saying, "All right, Maharaj, I know I'm a nonsense, but I'm trying not to be a nonsense." So I wrote one time when I thought he was seeing me as a nonsense, I wrote him a letter and I apologized for being a nonsense. मैं महाराज से बोलता, महाराज मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से करने का। एक बार मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, तो मैंने महाराज को पत्र लिखा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने इस तरह से कुछ गलती कर दी। And he wrote back in such a loving way. He said, "You can't do anything wrong. Don't worry." और फिर महाराज ने मुझे बहुत प्रेम पूर्वक पत्र लिखा कि आप चिंता मत कीजिए, आप कुछ भी गलत भी कर सकते हैं। So he started to praise me, and I felt even worse. तो वो मेरी प्रशंसा इस तरह कर रहे थे और करने लगे, और मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा। I felt good and worse at the same time. तभी लिखा था और बुरा भी लग रहा था। So yeah, these are some of my impressions of Maharaj. ये मेरे कुछ अनुभव हैं महाराज के साथ।
course, I told that story of how I first met him. Did you all hear that story? How many of you didn't hear the first story when I first met him? जब मैं महाराज से पहली बार मिला तो किस किसने नहीं सुना कि क्या हुआ था उस समय? Put your hands up high so I know. थोड़ा हाथ ऊपर अच्छे से उठाइए. These are the ones who didn't hear the story and when I first met him. Yes. Okay, I'll tell it again. It was in the year 1981. तो 1981 की बात है. So I had the service of being the pujari at Srila Prabhupada's palace after the palace opened in New Vrindavan. तो महाराज बता रहे हैं कि जब न्यू वृंदावन में श्रील प्रभुपाद के महल का उद्घाटन हुआ था तो उस समय महाराज की वहाँ पुजारी की सेवा थी. And I never traveled much. I was always in New Vrindavan because I hardly ever knew any senior devotees. The only senior devotees I knew was the ones that would come to visit New Vrindavan. तो मैं उस समय ज़्यादा भ्रमण नहीं करता था, न्यू वृंदावन में ही रहता था. वरिष्ठ भक्तों को ज़्यादा जानता नहीं था. जो भक्त न्यू वृंदावन में आते उन्हें ही जानता था. So when Maharaj came in 1981, it was the first time I met him, although I'd been in the movement for 8 years at that time. तो जब महाराज 1981 में पहली बार आए तभी मैं उनसे मिला, क्योंकि हालांकि मैं 8 साल से आंदोलन में था फिर भी. And he came, and in Prabhupada's palace, we had a regular cook. That was Nandu Kumar, Prabhupada's disciple, personal servant for many years. And I was the pujari. तो महाराज आए और हमारे पास श्रील प्रभुपाद के लिए एक व्यक्तिगत कुक थे जिनका नाम था नंदू कुमार, और मैं जो था पुजारी की सेवा कर रहा था. So he came to see Srila Prabhupada at the palace. तो महाराज श्रील प्रभुपाद के दर्शन करने के लिए आए. And I was really happy because I had heard he's a great devotee. और मैंने सुन रखा था गुरु महाराज के लिए कि वो बहुत ही एक महान भक्त हैं. मैं बहुत खुश था कि वो आ रहे हैं. So he had requested Nandu Kumar if he could cook for Prabhupada that day. तो गुरु महाराज नंद कुमार प्रभु से निवेदन किया कि क्या मैं बनाऊं क्या प्रभुपाद जी के लिए. And Nandu Kumar stepped aside, and Bhakti True Maharaj went into the kitchen. And I was there waiting on the altar, getting the altar prepared for the offering. और नंद कुमार प्रभु फिर हट गए और शिष्य भक्ति चौहान गुरु महाराज प्रभुपाद जी के लिए भोग बनाने लगे, और मैं जो है ऑल्टर में इंतजार कर रहा था कि भोग आएगा, मैं ऑफर करूंगा. And Maharaj just spent a long time, but he cooked this huge feast. It was Raj Bhog offering also. तो गुरु महाराज ने बहुत समय बिताया और बहुत सारे व्यंजन तैयार किए. उस समय ये राजभोग की भी ऑफरिंग का समय था. And I never saw him before in person, so I was kind of watching. तो मैंने कभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं उन्हें And I could see how absorbed he was in cooking. That it was like nobody else was around. तो मैंने देखा कि वो कितने डूबे हुए हैं प्रभुपाद जी के लिए भोग बनाने में, कोई भी उस समय आसपास नहीं था. So he finished, and then we made up the plates. It was like 2 full plates of bhoga to be offered to Srila Prabhupada. तो उन्होंने भोग तैयार किया और उसके बाद हमने ऑफरिंग करने के लिए 2 बड़ी-बड़ी प्लेटों में सारे भोग को रखा. So he gave me the plates, and I put them on the altar, and then I started to do the offering on the altar. तो उन्होंने मुझे वे 2 बड़ी प्लेटें दी और मैंने उन्हें ऑल्टर पे रखा और फिर प्रभुपाद को अर्पित करने लगा. Just when I finished the offering, Maharaj comes walking on the altar. जैसे ही मैंने ऑफरिंग को समाप्त किया ऑफर करने को, और महाराज उस समय ऑल्टर में प्रवेश करते हैं. And he noticed on the altar there was a drum. और फिर गुरु महाराज ने देखा कि ऑल्टर में एक ड्रम है. Small little drum. We used to call them the tom-tom drum. You hold them like this and you beat them like this. It goes tum 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 tum. एक छोटा ड्रम था ऑल्टर में, उसे हम बोलते थे टम टम ड्रम. So that was the first drum that Srila Prabhupada had
when he started the Hare Krishna movement in New York in 26 Second Avenue in 1965, that drum was before we had any mridanga. तो ये जो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के पास ये टन ड्रम ही था 1965 में, जब 22nd एवेन्यू में जब शुरुआत की थी कीर्तन की, तो मृदंग से पहले ये ड्रम ही उनके पास था। So that drum was sitting on Prabhupada's altar. और अभी वही ड्रम श्रील प्रभुपाद के ऑल्टर में, Same drum that started the Hare Krishna movement. वही ड्रम था जिसने हरे कृष्ण आंदोलन को शुरू किया। And when Maharaj saw the drum, he got really emotional. He picked up the drum and he held it to his chest like it was the most dearest thing to him. तो जब गुरु महाराज ने उस ड्रम को देखा तो वो बहुत बहुत भावुक हो गए। उन्होंने उसे उठाया और अपनी छाती से ऐसे लगाया जैसे सबसे ज्यादा प्यारा उन्हें यही है। And he said, "This is the drum that started the Hare Krishna movement." और गुरु महाराज ने कहा कि ये वो ड्रम है जिसने हरे कृष्ण आंदोलन को शुरू किया। I was seeing that drum every day, and I wasn't getting so excited about it. मैं तो उस ड्रम को हर दिन ही देख रहा था, लेकिन मेरा कोई इतना ज्यादा अलग से कुछ नहीं था उसके लिए। When Maharaj showed so much attraction and affection for that drum, I thought, wow, that's a deity. तो जब महाराज ने उस ड्रम के लिए इतना आकर्षण दिखाया, उतना अफेक्शन दिखाया, तो मैंने सोचा कि ये एक विग्रह है, ड्रम नहीं। Yeah, so that helped me appreciate my association. तो मेरा भी उनके प्रति प्रशंसा का भाव बढ़ा उसके प्रति। So, you know, after we took the offering off, and then we transferred the plates, and we took prasadam together. तो ऑफरिंग करने के बाद हमने प्लेट ट्रांसफर की और उसके बाद हमने साथ में प्रसाद ग्रहण किया। I wasn't sannyasi at the time. I was still brahmachari at the time. उस समय मैं सन्यासी नहीं था, मैं अभी ब्रह्मचारी ही था। I didn't take sannyas until 1986, and that was 1981. 1986 में मैंने संन्यास ग्रहण किया और ये 1981 की बात। But he was so kind, you know, we took prasadam. लेकिन वो इतने दयालु थे, हमने साथ में प्रसाद लिया। And then he had some business in other places in New Vrindavan, and he left. उसके बाद गुरु महाराज को कहीं और जाना था न्यू वृंदावन में, तो वो चले गए वहां से। When he left, he forgot his socks. जब वो गए तो अपने मोजे ले जाना भूल गए। He had taken off the socks to go on the altar, but when he left, he forgot to put them back on. ऑल्टर में जाते समय उन्होंने मोजे उतार दिए थे, लेकिन ऑल्टर से जब निकल के आए तो फिर मोजे पहनना भूल गए। So then I picked him up, and I was thinking I should give it to him, and then another thought said, "No, don't give it to him." तो मुझे पता चला तो मैंने कहा कि जाके उनको दे देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं उनको नहीं। So I kept the socks. तो मोजे मेरे पास ही रख लिए मैंने For many years, and then I think somebody asked me for them, and I gave them away. बहुत सालों तक मेरे पास ही थे, फिर बाद में किसी ने मुझसे मांगे तो मैंने उसको दे दिए। Yeah, so I stole Maharaj's socks. But he never said anything about his socks being missing, so I guess it was okay. तो मैंने महाराज के मोजे ले लिए, लेकिन महाराज ने कभी नहीं कहा कि मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि ठीक है, मैंने कहा चलेगा। I'm not a thief, but there's certain things that you should practice stealing because it's something you'll never get a chance to do again. महाराज कह रहे हैं कि मैं चोर नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजों का हमें चुराने का अभ्यास करना चाहिए जो आप समझते हैं कि बार बार मिलने वाली नहीं है। Krishna is also a thief. He steals butter. कृष्ण भी एक चोर हैं, वो मक्खन चुराते हैं। But he steals something even more valuable than that. लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण भी चीज चुराते हैं। He steals your heart. वो आपके हृदय को चुरा लेते हैं। And if you try to get it back, forget it. He won't give it back to you. और यदि आप चाहो कि फिर से मुझे मेरा दिल मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको वापस देंगे नहीं फिर। And out of all the things that he steals mostly the devotee's heart. और जितनी चीजों को वो चुराते हैं, उनमें सबसे अधिक जो चीज चुराते हैं वो है भक्तों का हृदय। So I was an authorized thief.
इस प्रकार से मैं जो है एक अधिकृत चोर। So these are the two really outstanding experiences I had with Maharaj. Of course, we had many other smaller interactions many times. इस प्रकार ये दो जो है बहुत ही विशेष जो महाराज के साथ आदान प्रदान हुए थे। हालांकि इसके अलावा कई और आदान प्रदान हुए अलग अलग समय पे। When we were here, and I think it was either the opening or the Guru Sangha. I can't remember what it was, but we were dancing in Kirtan. Maharaj was in the Kirtan also. तो जब मैं यहाँ पे उज्जैन में था उस समय शायद गुरु संघ था या उद्घाटन का समय था गुरु संघ। But I was dancing a little bit faster than he was. तो महाराज और मैं एक साथ मंदिर में नाच रहे थे, लेकिन मैं महाराज की तुलना में थोड़ा तेज नाच रहा था। I was thinking he's dancing too slow. मैं सोच रहा था कि ये बहुत स्लो नाच रहे हैं। I tried to get him to dance faster. तो मैंने प्रयास किया कि उनको भी थोड़ा तेज-तेज नचाऊं। And it worked. और उससे काम हो गया, वो भी नाचने लगे। And then we were dancing together. It was really sweet. और फिर हम एक साथ डांस कर रहे थे, बहुत मधुर था। Right here in the temple. मंदिर में। Yeah. So these were that was probably my most wonderful experience in dancing with Maharaj. तो मेरा शायद सबसे अच्छा अनुभव यही था महाराज के साथ नृत्य करने का। And of course, many times he would invite his God brothers, God sisters to take prasadam. और कई बार वे अपने गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को बुलाते थे साथ में प्रसाद लेने के लिए। So many times we took prasadam together. हमने कई बार साथ में प्रसाद लिया। But these are things that I can remember. And there's a lot of smaller things, traveling together and doing just doing the ordinary Krishna conscious activities. But these are the two things that I can remember: the situation in Prabhupada's palace and the situation in Chicago. These are the things that really were outstanding. इस प्रकार से हम जब साथ में थे तो बहुत बार हमने यात्राएं की, विष्णु भक्ति के विषय चर्चाएं की, लेकिन ये दो जो घटनाएं हैं, एक तो शिकागो में और दूसरा प्रभुपाद के पैलेस में, ये मुझे विशेष रूप से याद है। Many other, what we say, not small things, but things that were just things that were happening in our association together. इस तरह और भी बहुत बातें हैं, छोटी छोटी नहीं हैं, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो हम साथ में थे तो होती थी। Any questions? Yeah. Yeah, I think that was the time we were walking then. Yeah. There's that one. There's a lot of pictures. That's just one. Yeah, that's Temple Hall. That was sweet. Every time he would see me, he would say, "Where's Radha Swami?" जब भी मुझे देखते तो मुझसे पूछते थे, राधा स्वामी महाराज कहाँ हैं? Because their relationship was so deep, really deep. Even Maharaj said after Bhakti True Maharaj left, he said, we would sit together and talk about Krishna for hours and hours. क्योंकि राधा स्वामी महाराज और गुरु महाराज के बीच में संबंध बहुत ही गहरा था। गुरु महाराज के जाने के बाद राधा स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज और मैं बैठ के घंटों कृष्ण कथा करते थे। And when I would see him coming, and I know he'd be coming to meet me, and I had to be thinking, where's Radha Swami now? Because he's going to ask me that. महाराज बोल रहे हैं कि जब भी महाराज देखते थे कि गुरु आ रहे हैं तो वो सोचते थे कि मुझे सोचना पड़ेगा राधा स्वामी महाराज कहाँ हैं, क्योंकि ये पूछेंगे। They were really, really close. Really, I mean, we can't even imagine how close they were. Very close.
हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनके बीच में कितना गहरा रिश्ता था, बहुत ही गहरा रिश्ता। And when Radhanath Swami even said when Maharaj left, it became such a pain for him that it was impossible for him to even think of anything else for a long time. It was such a devastation for Radhanath Swami when Bhakti Charu Maharaj left. तो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब भक्ति चरण स्वामी महाराज इस संसार से प्रस्थान कर गए तो राधानाथ स्वामी महाराज के लिए बहुत सबसे बड़ा एक कष्टदायक क्षण थे उनके लिए, और काफी लंबे समय तक वो कुछ और सोच ही नहीं पाए। If Radhanath Swami gives talks here, and then you could sit here for like weeks just listening. He has so many experiences with Maharaj. यदि राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पे आके उनके बारे में बताते हैं तो कई हफ्तों तक बैठ के आप सुन सकते हैं, इतने सारे अनुभव हैं उनके महाराज के साथ। Any questions or comments? कोई प्रश्न है कोई? Way in the back there, yeah. हाँ, I've been going to temple since last 15 years. 15? I'm 8 years old and we shifted to temple when I was 4 years old. So practically I have been growing in this temple under the grace of Guru Maharaj. And I have seen Guru Maharaj as my mother, my father, my friend, my elder brother, like in every relation. And I've only seen him as my Guru Maharaj. Right. I could not take Diksha. I wrote him a single letter and he happily accepted me as well. But before he was going to USA, I wrote him that letter and I got the reply, but then he went to USA. So now you're initiated. Yes, you are. In the heart. Initiation takes place in the heart. This formal ceremony is just to consummate or to give accreditations to what's in the heart. You are a disciple, no doubt. 100%. Because it's what's in the heart that makes the connection. That is the connection. The formal ceremony just gives us the contract that we follow. But the actual connection is in the heart. तो प्रश्न ये है कि मैं बचपन से ही इस मंदिर में ही बड़ी हुई हूँ और गुरु महाराज को मैंने बड़े भाई के रूप में, पिता माता सभी संबंधों में मैंने उनको देखा है, और गुरु महाराज को मैंने पत्र लिखा था शरणागत होने के लिए, उसका रिप्लाई भी आ गया, लेकिन फिर दीक्षा हो नहीं पाई। तो महाराज बता रहे हैं कि आपकी दीक्षा हो गई। So no doubt he is your spiritual father, 100%. क्योंकि दीक्षा का जो रिश्ता है वो हृदय से संपन्न होता है, बाहरी जो यज्ञ वगैरह है वो केवल एक उस रिश्ते को एक पुष्टि करने के लिए है। तो कोई संदेह नहीं है कि आप उनकी शिष्या हैं 100%। As far as I could understand my Guru Maharaj, he would really like me to also complete the formal ceremony of Diksha. And now I'm aspiring from this goodness, Radhanath Swami Maharaj. But I see a lot of insincerity, lack of discipline in my heart to surrender to again. So how can I strengthen my relationship with the spiritual master? No, not see any difference in them. There isn't no difference, but actually your guru is Bhakti Charu Maharaj. तो प्रश्न ये है, फिर इससे आगे प्रश्न है कि अभी गुरु महाराज चाहते थे कि मैं उनसे औपचारिक रूप से दीक्षा ग्रहण करूं, लेकिन वो हो न पाया। अभी मैं श्री राधानाथ स्वामी महाराज को उनको दीक्षा लेना चाहती हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी मुझे लगता है बहुत कमियां हैं, तो मैं समर्पण नहीं कर पा रही हूँ। I'll give you a practical example. महाराज बोल रहे हैं कि आप उनसे दीक्षा लीजिए, लेकिन आपके जो हृदय में अपने गुरु स्वीकार किए So हैं, there was महाराज हैं। one lady, she was eventually from the UK, but then she shifted to Mayapur, and she was my aspiring disciple. तो एक उदाहरण दे रहे हैं, महाराज के एक शिष्या दीक्षा लेना चाहती थी, तो यूके से थी, लेकिन मायापुर में शिफ्ट हो गई। But then Sridhar Swami Maharaj, my god brother, senior god brother, he came to Mayapur and he stayed there during the time when he was departing the world. And so she got to do personal service for him. तो उसी समय महाराज के वरिष्ठ गुरु भाई श्रीधर स्वामी महाराज उस समय मायापुर में थे और वे संसार से प्रस्थान कर रहे थे, तो उन माताजी को उनकी सेवा मिली।
And by doing that personal service, she became really close to him. और वो व्यक्तिगत सेवाएं करते हुए वे जो हैं उनसे बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हो गई। So then she wanted him as her spiritual master. तो फिर वो चाहती थी कि अब मैं श्रीधर स्वामी महाराज से दीक्षा लूं, उन्हें गुरु बनाऊं। But she didn't tell me. लेकिन उन्होंने महाराज को नहीं बताया। And then, of course, she gave her heart to him. And then at one point, he left the world, but he didn't give her initiation. He wasn't giving initiations at that time. तो एक तरह से वो माता जी ने पूरा मन बना लिया था कि उन्हीं से दीक्षा लेनी है, लेकिन वे संसार से प्रस्थान कर गए और उनकी दीक्षा उनसे हो न पाई। But she was quiet about her feelings. She didn't say anything to me. लेकिन जो माता जी थी उन्होंने अपनी ये भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं की। And then she went to Giriraj Swami. और उसके बाद वो गिरिराज स्वामी महाराज के पास गई। And she took initiation from Giriraj Swami. और फिर उन्होंने दीक्षा ली गिरिराज स्वामी महाराज। And then I spoke to Giriraj Swami after. और उसके बाद मैंने उनसे गिरिराज स्वामी महाराज से बात की। And he said with such emphasis, he said, Sridhar Swami is her spiritual master. I'm just connecting her to the parampara. That's all. गिरिराज स्वामी महाराज ने बहुत जोर देकर कहा कि इसके जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो श्रीधर स्वामी महाराज हैं, मैं केवल उसको परंपरा से जोड़ रहा हूँ। Because she had given service and her heart to Sridhar Swami, so therefore he was actually her spiritual master. क्योंकि उस माता जी ने अपनी सेवा और अपना हृदय श्रीधर स्वामी महाराज को समर्पित किया था, तो वास्तव में वही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। And Giriraj Swami told me that personally. He said, her spiritual master is Sridhar Swami, not me. I am just her shiksha. I am connecting her to the parampara through the process of initiation, which is required. So that's the same situation you're in. गिरिराज स्वामी महाराज ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा कि उनके गुरु श्रीधर स्वामी ही हैं, मैं केवल उनको परंपरा से जोड़ रहा हूँ दीक्षा की औपचारिक विधि के द्वारा, तो आपकी भी स्थिति वैसी ही है। So you're lucky you get two spiritual masters. Both great souls. Because there's no difference. Whatever Radhanath Swami's teaching is also the same as Bhakti Charu Maharaj's teaching. There's no difference. They're both, stalwart preachers. They're both dedicated to the mission of spreading Krishna consciousness. They both have the same mood. Their mood is very much the same. And that's important. You'll see that. That's why they were always so close together. आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको दो आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हुए हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का अनुभव एक ही है, दोनों महान प्रचारक हैं, दोनों के उपदेश एक ही हैं। There was one devotee who is a disciple of Bhakti Charu Swami Maharaj. तो एक भक्त थे जो भक्ति चारू स्वामी महाराज शिष्य हैं। And I knew him really well. He used to also consider me his Shiksha Guru. But he actually took initiation from Bhakti Charu Swami Maharaj. तो मैं उनको अच्छे से जानता था और वे मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में ही मानते थे, लेकिन दीक्षा उन्होंने भक्ति चारू स्वामी महाराज से ली। But he wanted to take second initiation. और अब वो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते थे। So he was thinking of taking second initiation from me. सोच रहे थे कि अब ब्राह्मण दीक्षा वो मुझसे लेना चाह रहे थे। But Bhakti Charu Swami appeared to him in a dream and said, take initiation from Giriraj Swami. True story, I mean. उनको सपने भक्ति चारू स्वामी महाराज आए, उन्होंने कहा कि एक काम करो, गिरिराज स्वामी महाराज से ब्राह्मण दीक्षा ले लो। Yeah. I was happy with that. मैं तो उससे खुश था इस बात से। And but Giriraj Swami wasn't personally present to give the initiation. So I sat there doing the ceremony to be the officiating guru for Giriraj Swami to give the initiation to this disciple who was Bhakti Charu Swami's disciple. महाराज बोल रहे हैं कि मैं गिरिराज स्वामी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में मैंने यज्ञ संपन्न किया ताकि वो गिरिराज स्वामी महाराज से ब्राह्मण दीक्षा उसको प्राप्त हो, और वास्तव में वो शिष्य किसके थे? भक्ति चारू स्वामी महाराज। But I'm very close to this disciple.
really, really close. Because I actually met him before he actually took shelter of Bhakti Charu Swami. लेकिन I mean, मैं yeah. लेकिन मैं उस शिष्य के बहुत ही मतलब उसके बहुत ही मेरा अच्छा संबंध है, क्योंकि भक्ति चरण से महाराज के समर्पित होने से पहले भी मैं उनको जानता था। So you're a disciple of Bhakti Charu Swami, but you get the mercy of Radhanath Swami also. तो आपके लिए कहा जाए तो आप भक्ति चरण से महाराज के शिष्य हैं और आपको साथ में राधा से महाराज की कृपा भी प्राप्त हो रही है। And you'll also of course you'll be seen as a Diksha disciple of Radhanath Swami, but in the heart it's Bhakti Charu Swami. So you have two, no problem. तो दीक्षा की बात करें तो दीक्षा जो है राधा से महाराज से दीक्षा प्राप्त शिष्य के रूप में जाना जाएगा, लेकिन हृदय में because भक्ति चरण से the महाराज principle everyone knows, Guru is one. There's only one spiritual principle. Guru is one, Krishna is one, the teachings of pure devotional service is one, the path of bhakti, the path back home back to Godhead is one. But it branches into many manifestations that bring about that same result. There's only one spiritual master. तो ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं कि कृष्ण एक, भगवान एक हैं, गुरु एक हैं, शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो भी एक है। भगवत की विधि जो है वो एक विधि है, लेकिन ये कई रूप में प्राकट्य होता है ताकि इसके माध्यम से हम उस अंतिम लक्ष्य से जुड़ सकें। And who is that spiritual master? Krishna. और वो एक आध्यात्मिक गुरु कौन है? वास्तव में वो कृष्ण है। Another name for Krishna is called Adi Guru. कृष्ण का एक और नाम है आदि गुरु। Yeah. He's the original spiritual masters by which all other spiritual masters come from. To be specific, it's Lord Balaram, actually. तो कृष्ण ही आदि गुरु हैं, या फिर और अच्छे से कहें तो बलराम हैं वो, और उन्हीं से सारे बाकी आध्यात्मिक गुरुओं का प्राकट्य होता है। So all of these personalities that are playing the role of guru are connecting you to Krishna. ये सारे जो व्यक्तित्व हमारे जीवन में हैं, ये आध्यात्मिक गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं और हमें कृष्ण से जोड़ रहे हैं। 2 and 2 is 4, 3 and 1 is 4. 2 और 2 4 और 3 और 1 भी 4। Does that help? Yeah. You're very fortunate. आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और Thank you for that question. Yeah. Yes, Prabhu. Yes, please. Do you need a microphone? Okay. Mhm. The actual description in terms of the tattva understanding is very hard to understand. But the principle is spiritual master is the person you give your heart to. तो प्रश्न ये है कि जब हमारी दीक्षा तो हो गई, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा हम किसी और गुरु से लेते हैं तो हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए? वास्तविक उन गुरु जिनसे दीक्षा उनके आधार उनके बिहाफ पे ये ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, या जो ब्राह्मण से दे रहे हैं उनके प्रति भी कुछ समर्पण होना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में गुरु तो बहुत कठिन है समझना। Giving your heart to means giving your life to. लेकिन गुरु वास्तव में वो हैं जिनको अपना दिल दे देते हैं। दिल देने का मतलब उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। So even if you haven't had the opportunity for whatever reason to take the formal initiation, the person that you actually surrender your life to, that is your spiritual master. हो सकता है किसी को आपने गुरु माना, औपचारिक दीक्षा फिर भी हो ना पाई, लेकिन जिनके प्रति हृदय में समर्पण भाव है वही तो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं वास्तव में। So the person you take initiation will actually be representing your spiritual master. तो फिर जब समर्पण आपने गुरु के प्रति कर दिया तो बाद में किसी और से दीक्षा होती है तो वो आपके गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। But one thing you should make sure is that the mood is the same. लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए कि दोनों गुरुओं का जो मनोभाव है वो एक तालमेल होना चाहिए। So the initiating spiritual master doesn't overshadow the mood of your actual spiritual master.
ऐसा ना हो कि जिनसे आप दीक्षा ले रहे हैं अभी, वो जो जिनको आपने हृदय में गुरु माना है, उन दोनों के मनोभाव में फर्क हो। And that you have to study to make sure that mood is the same. इसके लिए आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो दोनों का मूड एक होना चाहिए। But with Radhanath Swami and Bhakti Charu Swami, it's like Krishna Balaram, you know. It's like there's no difference. It's हम बात like करें Brajendra Nandana Ye Sachi Sutta Holi Se Balaram Hoila No Nitai. यदि हम बात करें राधानाथ स्वामी महाराज और भक्ति चरण स्वामी महाराज की, तो ऐसा है कि कृष्ण बलराम है। Brajendra Nandana Ye Sachi ब्रजेंद्र नंदन Sutta. जी, जो ब्रजेंद्र नंदन है, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु उस तरह से हैं, और बलराम और निताई। Yeah, so no problem. No difference. उन दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई मूड का अंतर नहीं। Did you get the first one? Okay. Before you take another bite, you have to digest the first bite. Like they were giving me pizza last night and they were going faster than I could digest, but somehow we made it through. Proceed. Yeah. In other words, he may go back to Godhead, but then because his mood is to save the conditioned souls. तो ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु जो हैं, इस जगत में सेवा जारी रखते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वो भगवतधाम चले जाते हैं। तो महाराज बोल रहे हैं, हाँ भगवतधाम चले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका जो मनोभाव है कि बद्ध जीवों को बचाना है। Whether they check in or not, we're not sure. But the point was, Tamal Krishna asked Srila Prabhupada, are there some, souls who never go back to Godhead, who just stay preaching in the material world? Prabhupada said, yes, with such enthusiasm, because that is really what pleases Krishna. One who gives their life to, rescue the conditioned souls, life after life. तो पॉइंट ये नहीं है कि वे भगवतधाम चाहते हैं या इस जगत में ही सेवा करते हैं। इसने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद क्या कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भगवतधाम चाहते ही नहीं, प्रचार ही करते रहते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ ऐसे भी हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पसंद कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय जो है वो यही है, बद्ध जीवों को बचाना। Okay, question? Yeah, because spirit means unlimited. क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो उनका रूप दोनों जगह पे हो, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी। बोले हाँ, ये भी संभव है। Material is limited, spiritual is unlimited. Therefore, a great soul can be in many places. चिन्मय तत्व जो है वो तो अनंत है, इस प्रकार एक महान आत्मा एक साथ ही कई जगह विद्यमान हो सकती है। To say no would be to defy the actual tattva of spirituality, which is unlimited. तो जो आध्यात्मिक तत्व है वो इस तरह अनंत है। Is that okay? Thank you. Any other questions? Oh yeah. Who's going to translate your question? I'll translate it. Which one do you want to ask it in? What language? I will say English. Oh, yeah. Yeah, because I won't be able to understand it. Unless you say it in English. So, thank you, Maharaj, for bringing us closer to Guru Maharaj. My question was that sometimes, like it has been a time that Guru Maharaj disappeared from our material vision, but sometimes I'm not able to feel that way, that Guru Maharaj actually disappeared. Like that. He's still here. Well, I don't feel in that way that it disappeared or that kind of separation.
like That's good, because that means you're still feeling his presence. And many people go through that experience after the great soul leaves. Even I, after Bhakti Charu Maharaj left, I didn't believe it. I just didn't believe it. Because it was just too much for me to accept. I was just thinking, he's here, I'll just go to Mayapur and I'll see him again. So we also feel like that. It's just a feeling of love. प्रश्न इस तरह से है कि गुरु महाराज को गए हुए कुछ समय हो गया, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है कि गुरु महाराज हमारे बीच नहीं है। मतलब ऐसी एक मनोभाव ऐसा आता है, तो क्या है, कैसे समझें इसको? तो महाराज बोल रहे हैं कि अच्छा है, ऐसा आपको लगता है कि गुरु महाराज आपके बीच में हैं। अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैंने सुना कि वो चले गए, तो मुझे लगता नहीं कि चले गए, वो हमारे बीच हैं, ऐसा फीलिंग आती है। I feel that is it due to lack of attachment? I don't have attachment to him, or like It could be either, complete attachment or no attachment. So, complete attachment is indicated by your dedication to the service. Therefore, since you're dedicated to the service, obviously it's attachment in love and bhakti, and not detachment because of physical disappearance. If you give up your service, then that means that it's Maya. But if you stay fixed in your service, because when Bhakti Tirtha Swami left, I was there along with Dhanadhar Swami and a couple other senior devotees, and we had to preach really heavy to the disciples for days, just to let them know that spiritual master is still present. You shouldn't give up your service. You shouldn't go away, because some people go away. When Prabhupada left, how many people left? So many people left when Prabhupada left. They couldn't continue without Prabhupada's presence, and they just gave up their connection. Yeah. तो आगे प्रश्न ये है कि क्या ये इसलिए तो नहीं है कि हमारे को आसक्ति नहीं है गुरु के प्रति, इसके कारण हमको लगता ही नहीं है कि वो हैं या नहीं है? महाराज बोले दोनों हो सकता है, या तो पूर्ण आसक्ति है या कोई आसक्ति नहीं है। यदि आप अपनी सेवा अच्छे से कर रहे हैं और उनके प्रति समर्पित हैं, तो इसका मतलब आपकी आसक्ति है। अगर आप सेवा को छोड़ देते हैं, इसका मतलब जो आपके अंदर जो वैराग्य आपको लग ही नहीं रहा है कि है या नहीं, वो फिर एक माया है। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्वामी महाराज जब इस संसार से चले गए, तो उनके शिष्यों को हमें दिनों तक समझाना पड़ा, स्वामी महाराज और महाराज को, कि आपके गुरु गए नहीं हैं, आपके गुरु आपके बीच हैं, आप छोड़ के मत जाइए। क्योंकि कई बार जब गुरु चले जाते हैं तो कई शिष्य छोड़ के चले जाते हैं। प्रभुपाद जब चले गए थे तो कई शिष्य इस्कॉन छोड़ के चले गए। No, it's not. It's not indifference. It's actually because you're staying fixed in your service. That is the indication that you're still connected with your spiritual master very much. तो इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि आप अपनी सेवाओं में दृढ़ रहते हैं, तो इसको ये समझना चाहिए कि आप अभी आध्यात्मिक गुरु से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। Some disciples think, oh, it was so nice when the Guru Maharaj, now he's not here, and I don't feel like doing service anymore. They feel like that. कई शिष्य इस तरह सोचते हैं कि अरे कितना अच्छा था जब गुरु महाराज हमारे बीच थे, और अभी गुरु महाराज नहीं है, तो वो सेवा करने की उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती। इस तरह सोचते हैं। Because they don't understand the spiritual master still lives in the heart of his devotee, even though he may not physically be present. जो ये नहीं समझते हैं कि आध्यात्मिक गुरु अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से अभी नहीं दिख रहे हैं। And the more we dedicate to following his instructions and keeping his mission foremost in our service, the more we can experience his presence. और उतना जितना हम उनके आदेशों को भी समर्पित होंगे और उनको प्राथमिकता देंगे, उतना हम उनको अनुभव कर पाएंगे। Is that okay? Thank you. Hare Krishna. Anyone else would like to ask something? और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Okay.
Question? Oh, okay. Thank you very much, Maharaj. That is one question. Maharaj, if the disciple has received instruction directly or indirectly from the spiritual master, and that kind of a strong determination is not coming to fulfill because the instruction may be little heavy. So, how to deal with this? One has received an instruction from the spiritual master, but is not clear about how to execute that instruction. Is that the question? It's a little heavy. How to get the great The instruction is too heavy. प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक गुरु से हमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कोई निर्देश प्राप्त हुआ और अभी हम उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन ही बहुत भारी है, तो हमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कैसे उसको पूरा करें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? It's not the instructions heavy, it's your attachment that's heavy. महाराज बोल रहे हैं उपदेश उतना भारी नहीं है जितनी कि आपकी आसक्ति ज्यादा भारी है, भौतिक आसक्ति। It's heavy because you're attached to something else. आपको उपदेश बहुत ज्यादा वजनदार लग रहा है क्योंकि आपकी आसक्ति और कहीं फंसी हुई है। So that heaviness is meant to get rid of that attachment. तो वो जो भारीपन इसके दिया है कि उस आसक्ति से आप छूट पाओ। So consider it special mercy, not mercy, special mercy. तो ये जो भारी उपदेश दिया है इसे आप कृपा नहीं विशेष कृपा समझिए। When Srila Prabhupada was asked, did you ever get chastised by your spiritual master? एक बार श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया कि आपको भी मतलब आपको जो है आपके गुरुदेव ने डांटा कभी? Prabhupada said, yes, that was my most happiest moment. प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, सबसे प्रसन्नता का क्षण मेरे जीवन में वही था। That means if the spiritual master makes it heavy or chastises you or says something that is praising, that's all right. But if he doesn't talk to you, then you're in problem. That's the problem. If he ignores you, then you have a problem. तो यदि आध्यात्मिक गुरु आपको डांटते हैं, फटकारते हैं या कभी कुछ बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तब है जब वो आपसे बात ही ना करें, जब वो आपको नजरअंदाज करें, तब आप समस्या में हैं। So whether it's chastisement or sweet words, it's all meant for your spiritual progress. कभी प्रशंसा भी करते हैं या कभी कुछ कठोर शब्द भी बोलते हैं, उनका उद्देश्य है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति करना। As a spiritual master is always thinking how to push his disciple forward. ये आध्यात्मिक गुरु एक ही चिंतन में है कि कैसे शिष्य को आगे बढ़ाया जाए। Sometimes by sweet words and sometimes by heavy words, but the motivation is the same. मधुर शब्दों के द्वारा कभी कठोर शब्दों के द्वारा, लेकिन उनके जो उद्देश्य है वो तो एक ही है। So see it as special mercy for making progress. तो आप देखिए कि ये विशेष कृपा आपको प्राप्त हुई है आध्यात्मिक उन्नति करने की। And if you still have difficulty, talk to one of the senior devotees to help you understand how to execute it. फिर भी आपको समस्या आती है तो किसी वरिष्ठ भक्त से बात कीजिए ये समझने के लिए कि आदेश को कैसे पूरा करना है। But I know your question. Your question is, I would like to discuss it with him. Right? That's your question. Yeah? Yeah, that's it. So you're going to discuss it with one of his representatives, and then Guru Maharaj will speak through that representative. तो मैं सोचता हूँ कि आप अभी ये प्रश्न करेंगे कि मैं तो उन्हीं से चर्चा करना चाहता हूँ, तो आप उनसे अगर जब नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके किसी प्रतिनिधि से चर्चा कर सकते हैं और आपके गुरुदेव उनके माध्यम से आपको समझाएंगे। So I would say one of his god brothers. तो मैं कहूँगा उनके किसी गुरु भाई से आप पूछ सकते हैं। Someone you can trust, someone you feel confident with. ऐसे किसी भी जिस पे आप विश्वास कर सकें, जिसको आप बता सकें।
Because a disciple will see the instructions of the spiritual master coming through many different channels. क्योंकि एक शिष्य ये देखता है कि आध्यात्मिक गुरु के उपदेश अलग-अलग माध्यमों से मुझे प्राप्त हो रहे हैं. The spiritual master never leaves the disciple, and he continues to guide the disciple through others. आध्यात्मिक गुरु कभी भी शिष्य को नहीं छोड़ते हैं और दूसरों के माध्यम से शिष्यों को मार्गदर्शन देना वो जारी रखते हैं. Is that all right? You look happy now. That's good. अभी आप दिख रहे हैं. That's good. We want everyone. What is that? What is that statement? Oh. Always forget this statement. Sarve sukhintu bhavanti. Sukhintu bhavantu. Let everyone become happy. That's Krishna consciousness. Sarva sukhintu bhavantu. Seva sukhina bhavantu. We always, and when we give marriage talks, we always say that. When people are getting married. महाराज बोल रहे हैं सभी प्रसन्न रहें, यही कृष्ण भावना में रहते हैं. That's Krishna consciousness. Let everyone become happy. यही कृष्ण भावना में रहते हैं कि सभी प्रसन्न रहें. सर्वे भवन्तु सुखिनः. Anybody else that has a question? Oh, yes. Ataji. Same situation, yeah. Yeah, because I was Mama and Papa joined Iskcon here. Then the center was not. And Guruvas used to come to Chandramauli. I was a family. So they joined and had but now I'm like 19 and 19, like 16 to 17 years. So it's like I had a long time Guruvas, but I was a bit shy and sacrificed. So I was like hiding behind it. And I was I want to please Guruvas, I want to please something. But I couldn't talk to Guruvas. I was so shy. So when I got 90% in 10, so I was like, Guruvas, I did something for you. I got good percentage in 10th. 10th standard. Oh, you got So in. Guruvas, I did something for you. So then I did something. And otherwise I was like, no, I couldn't talk to Guruvas because I felt that I don't serve Guruvas. So how can I talk to him? I don't have anything to talk to. So I never talked with him and like everything is happening. So I was a bit shy and I got less of the association if I would get otherwise in these 18, 17 weeks. And till now I'm serving Guruvas and when I'm in the front of Guruvas because he told Guruvas told in one of his classes that he is still present in his pictures everywhere. Yeah, true. So I just firmly believe that when I'm at my home, I have a bit like talking to him there. So I just when I'm burst out with the tears, like why I'm created. And so I just talk to him and he is Yeah. I listen to his classes a lot. I did the answering classes for Maharaja. Your relationship with him is now even stronger than before. Yeah, it is stronger. But it didn't actually I did that I was so shy, I was so bad, like you got this to face me. Like guilt that is buried in the heart. Your heart. It kills you. So how can I overcome that? Well, he knows your heart. He knows your sincerity. You continue talking to him. You continue to serve him. Continue.
you still feel, in other words, your problem is you feel guilty that, but your guilt was nothing. Yeah, you didn't do anything wrong. You were just too shy, that's all. So I just want my to be so shy and not talking to them because when I see others, with my brothers, my mothers, But- fathers, But you might have said something wrong when you were. Now you didn't say anything wrong because you didn't say anything. So that's good. You have a good relationship. I'm like you too. I had that same problem. I always never said things. And then when I took sannyas, I didn't want to say anything either. But they told me, you got to be able to talk anytime, in any place, in any situation, without preparing. So I thought, all right, this is the ultimate instruction. So shyness is a good quality, especially within the female gender. It's very good quality. So I think that was the foundation for building your relationship. And as you said, now you're feeling more that relationship. Sometimes we talk and then we say the wrong thing and then we regret that for about 2 years, So you never had that problem. So I think you should just be happy because you're nicely situated and reconnect, and you're connected with Maharaj eternally. It's always there. It's not gonna. Time will never change that. Time will only grow that relationship as you try to keep that relationship going by offering him your prayers, by asking him your questions, by offering him the results of your service. That relationship just builds and builds. My God, you must be out of the water now. 3 or 4 days you're crying straight? Oh my God, it's terrible. Well, that's actually good because the tears of love is the tears that get you back to the Godhead. These are the real tears. I think yeah, but don't cry too much because you got some service to do. Because if you do too much crying, you can't do your service. That's the problem. But it's good crying. And Prabhupada and the Acharyas say the price of getting back home, back to Godhead is to cry for Krishna. Crying for the spiritual master is the same as crying for Krishna. There's no difference. Mm-hmm. But some people cry for the wrong thing. And that you're crying for the right thing. That's good. But, there's nothing, everything you said sounds really nice. Sounds good. I wish I could cry for Krishna, but I haven't made it to that level yet. But basically, everything you said is, you were just telling me how much your relationship with Maharaj has increased since he left. It's only increased, right? Yeah. And that shows that you are sincere. Mhm. Mhm. Don't cry for the wrong thing. I'll tell you a story. There was one man. He was a rich merchant, and he his family members were all devotees except him. So they wanted to somehow make him a devotee also. So they called different sadhus,
and they call different holy men. तो महाराज अभी एक कहानी बता रहे हैं कि एक परिवार था, उसमें बहुत सारे लोग थे, एक ही भक्त नहीं था, अभी चाहते थे उसको ही भक्त बनाया जाए। And they try to get these holy men to preach and to somehow convince him to become a devotee, but he wouldn't change. तो वो पवित्र आत्माओं को बुलाते थे, अलग अलग उपाय करते थे, किसी तरह इसको ही भक्त बनाया जाए, लेकिन ये भक्त बन नहीं रहा था। So they called one sadhu तो एक साधु को बुलाया and asked him, "We're trying everyone, so please, maybe you can help him." उसको बोला कि ये जो अमीर व्यापारी है ना, इसको आप भक्त बनाइए। So this sadhu was a little intelligent. ये साधु जो है थोड़ा बुद्धिमान था। He decided to take him to Benares, Kashi. तो उसने निर्णय किया कि इस व्यापारी को हम बनारस काशी लेके जाते हैं। So the man went with the sadhu to Kashi. तो वो व्यक्ति चला गया, साधु के साथ काशी चला गया। And there they have the burning ghats. When the bodies are, people die, they take the body down to the ghat and burn, and everyone can watch. वहाँ पे इस तरह कई घाट हैं, आप देखे होंगे, जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं। जब किसी की मृत्यु होती है वहाँ पे जलाते हैं और सभी उसको देख पाते हैं। So the sadhu brought him to watch all the bodies burning. साधु उनको लेकर आए कि देखो चिताएं जल रही हैं, देखो। The ultimate preaching. अंतिम प्रचार तो यही है। So the rich man, he's looking, and then he starts crying. अमीर आदमी देख रहा है चिताएं जल रही हैं और फिर रोने लग जाता है, वो भी रो रहा है। And crying. रो रहा है। And he's really crying. वास्तव में बहुत ही रो रहा है। Sadhu was thinking, I finally reached him. साधु बोल रहा है, हाँ, अब इसको समझ में आ गई। So the sadhu asked him, "How do you feel?" कैसा लग रहा है तुमको अभी? He said, "Oh, I wasted my life. अरे मैंने पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया। I was a cloth merchant. I could have made more money selling wood." कपड़े का व्यापारी बन के जीवन बिता दिया, लकड़ी का व्यापार करता ज्यादा मुनाफा हो रहा है। So that's crying for the wrong thing. ये है गलत चीज के लिए हम जब रोते हैं, ये वो उदाहरण है। So people cry but if you're crying for Krishna, for Guru, then that's your ticket back to Godhead. यदि आप कृष्ण और गुरु के लिए रो रहे हैं, तो बस वही आपका टिकट है भगवत धाम के लिए। Okay, what time is it now? It's 9:11. 9:11. Interesting number. That's the first story I told. 9/11. अभी समय 9/11, जो पहली कहानी जो बताई थी अमेरिका में जो इमारतें गिर गई। So it is getting a little late. So, should we? If there's no more questions, we can have a short kirtan and then, yeah. कीर्तन कर सकते हैं अभी। Okay. Thank you. Bhakti Charu Guru Maharaj ki jai. Prabhupada ki jai. चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि भगवत की जय। We have been. Okay. 5-minute kirtan. Hare Hare Namah Krishna Yaravaya Namah. Hare Hare Namah Krishna Yaravaya Namah. Yaravaya Varavaya Krishnaya Namah.
Shimadasuran Giridhari Gopinath Madhuramohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Sri Rupa Sanatan Padragonathan Sri Deva Gopala Bhatta Radharakanhari Hari Hadaya Nama Krishna Yadvaya Nama Hari Hadaya Nama Krishna Yadvaya Nama Hari Haravaya Maravaya Kaisavaya Nama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hey! Oh! Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Shri Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Whoa! Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Hey! Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare
Gauranga. Hey! Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hey, Nitya Gaur. Gauranga, 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 Gauranga. Gauranga, 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 Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Satinandana, Jai Satinandana. Jai Satinandana, Jai Satinandana. Oh! Jai Satinandana, Jai Satinandana. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hariva, 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 Hariva. Nitai Gauranga, Hariva, Hariva, Hariva. Hey! Nitai Gauranga, Hariva, Hariva. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Bhakti Charu Mahagurudeva, Bhakti Charu Mahagurudeva. Hey! Jaya Bhakti Charu Swami Gurudeva, Bhakti Charu Swami Gurudeva. Nitai Gaur Hariva, 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 Hariva. Gauranga. Nitai Gaur Hariva, 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 Bhakti Charu Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki, Gaur Premanande, Hari 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 Ho.